Hello friends, after a long time we are going to study electrostats today for IIT JEE NEET-CBSE, whatever exam you are targeting for, right? So electrostats को हम पढ़ रहे हैं from the very basics. आपको कुछ doubt आएगा, you can put in the comments and we will discuss. So what is electrostats? So I have told you before also that in physics first of all observation comes. We observe something कि कुछ ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं और किसी थ्योरी को हम मान लेते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहली बात तो मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब है चार्ज, स्टैट्स का मतलब रेस्ट. सो चार्ज एट रेस्ट के फिनोमेनन को हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा हमने क्या ऑब्जर्व करा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है. तो आपने कभी ऐसा देखा होगा, कई बार आप किसी से फ्रेंड से हैंडशेक करते हैं, एकदम से आपको कुछ करंट सा लग जाता है, अरे ये कुछ स्पार्किंग सा होता है यहाँ पे. या फिर हम कहीं पे बैठते हैं, चेयर को टच करते हैं, वहाँ पे हमें एकदम से करंट लग जाता है. या फिर सर्दियों में ऐसा हुआ होगा, आपने ब्लैंकेट हटाया होगा और वहाँ पे कुछ आपको स्टैटिक चार्ज का अनुभव हुआ होगा. स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यानी कि वहाँ पे कुछ कर 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 ऐसे आवाज़ सी आपको महसूस हुई होगी, राइट? इफ़ यू पुट ऑफ योर स्वेटर इन द विंटर्स देन ऑल्सो यू माइट हैव फेल्ट दैट वॉइस, ऐसे कर 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 आपको साउंड सुनाई दिया होगा. या फिर बचपन में हम करते हैं कि स्केल को रब करते हैं हेयर पे और उससे हम पेंसिल के जो छिलके होते हैं ना, पेंसिल के जो सब होते हैं उसको उठा पाते हैं. या फिर हम बलून को रब करते हैं और दीवार पे चिपक जाते हैं. ये सब फिनोमेनन जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स के फिनोमेनन है. तो फिजिक्स के अंदर जो हमने देखा है ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो फिजिक्स में ब्रांच को भी ऐड करा गया, उसको हम स्टडी करने लगे कि भाई इसको भी स्टडी करते हैं. तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, राइट? तो इसके अंदर सबसे पहला जो सबसे बेसिक चीज है दैट इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ होता क्या है? दो चार्जेस हैं Q और Q, दोनों में R का डिस्टेंस है. ये आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो आपने शायद पढ़ा होगा पहले कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक? तो इनमें जो फोर्स होता है वो कितना होता है? तो आप मुझे बताएंगे अगर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आपस में फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? तो आप इसमें देखो एक्सट्रीम में सोचो, अगर चार्ज है ही नहीं तो फोर्स किस बात का? यानी कि चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाना चाहिए. सिमिलरली ये भी बहुत ज़्यादा है, फोर्स बढ़ जाना चाहिए. अगर मान लीजिए जो आपस में डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है तो फोर्स कैसा होना चाहिए? भाई बहुत ज़्यादा दूर चार्जेस हैं तो फोर्स कम हो जाएगा ना, उनका इफेक्ट एक दूसरे पे कम हो जाएगा. सो फोर्स विल रिड्यूस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी गेट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू KQQ by r square. What is this K? This is a constant 1/4 pi epsilon. Okay, epsilon. You can say epsilon, epsilon. So what is it? So suppose two charges are trying to oppose each other. एक दूसरे पर force लगाना चाह रहे हैं, but the medium is not allowing them to do so. अगर दो दो गुंडे लड़ना चाह रहे हैं तो साइड में पुलिस खड़ी है, वो लड़ने नहीं देगी उसको, right? So this is the absolute permittivity of free space slash air. So how much the air or space is allowing the charges to put some force on each other, that is the absolute permittivity. Permit करना, किसी को allow करना, right? So this is the force magnitude. If we change the medium, अगर हम मीडियम बदल दें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एब्सोल्यूट R लग जाएगा. एब्सोल्यूट R is the relative permittivity of medium. आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको हमने थोड़ा बदल दिया, मान लो बीच में हमने शहद डाल दिया, कुछ और भी डाल दिया, तो वो कितना अलाउ कर रहा है, राइट? So this is Coulomb's law, the basic force between two charges KQ and Q2 by R square. अब एक्चुअल में क्या होता है, कुछ बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, देखो KQQ by R square, लेकिन ये तो कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon. एक्चुअल में ये ही K होता है which is dielectric constant. So epsilon R is relative permittivity or the dielectric constant. See, this you have to remember. So this is the बेसिक फॉर्मूला. इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं, इसी के ऊपर आज पूरी क्लास होने वाली है. तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, मान लीजिए 100 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा?
100 वाला 1 पे कि 1 वाला 100 पे। ठीक, तो देखो अक्सर बच्चों का यही आंसर होता है कि 100 वाला ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बात तो मैंने आपको एक ही फोर्स का फॉर्मूला दिया है, कोई दो फॉर्मूले तो नहीं दिए, यानी कि दोनों जो होते हैं ना एक ही फोर्स लगाते हैं। इक्वल अपोजिट रिएक्शन दैट इट इज बीइंग फॉलोड हियर, तो न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल हियर दैट एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, राइट? इफ देयर आर टू चार्जेस दे विल अट्रैक्ट और रिपेल बाय द सेम मैग्नीट्यूड। Okay, so this is the first law of Coulomb's law. Okay, so if you have any doubts, you can write in the comments. We can discuss. So I will remove it. Okay. तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, होता है कि भाई घर में छोटा भाई है, बड़ा भाई है, लड़ाई होती है, दोनों बराबर के ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटा कम लड़ रहा है या फिर बड़ा शांत हो जाएगा कि भाई मैं बड़ा हूँ मैं छोटा, ऐसा नहीं, तो दोनों बराबर है। तो छोटा चार्ज हो बड़ा चार्ज हो भाई वो सेम ही फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब नाउ वी विल स्टडी द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज देयर इज अ चार्ज q, so at a distance r, so in general see electric field is the effect of a charge, in the layman's language it is the effect of a charge, उसका एक इन्फ्लुएंस है। तो अगर मैं q चार्ज से देखूं कुछ r डिस्टेंस पे फील्ड, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ अगर मैं +1 कूलम, जो कि पूरे चैप्टर में हमारा टेस्ट चार्ज रहेगा, ये हम टेस्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पे अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को रख दूं, जो इस पे फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at a distance R from it is the amount of force experienced by a unit positive charge, test charge at that point। ठीक, तो इनमें कितना फोर्स लगेगा भाई? तो फोर्स कितना आएगा? 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, so that means the electric field magnitude, so electric field is a vector quantity, force is a vector quantity, so it will become q by 4 pi epsilon r square। so this is the value of electric field at that point। okay, so electric field will charge q at distance r from it is kq by r square। ओके, सो अगर हम बनाएं, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो अगर हम देखें भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस ग्राउंड फील्ड लाइंस बनानी, तो हम क्या करेंगे? अपने टेस्टर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ फील्ड लाइन निकालनी है, तो यहाँ मैं +1 कूलम चार्ज को रखूंगा, तो क्या होगा? ये रिपेल कर देंगे, यहाँ रखूंगा रिपेल कर देंगे, मैं जहां जहां रखते जाऊंगा रिपल्शन होती जाएंगी और ये मेरी फील्ड लाइन तैयार होगी। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसे हैं? रेडियली आउटवर्ड और स्फेरिकली आउटवर्ड्स, इट इज कमिंग आउट, है ना? कैसे निकाला? यू जस्ट पुट द टेस्ट चार्ज देयर, जहां भी निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बनानी है, मैंने यहाँ पे टेस्टर को दिया, टेस्टर -1 ही होगा भाई, वो +1 ही होगा पूरे चैप्टर में। यहाँ रख दिया तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ रख दिया अट्रैक्ट नहीं, जहाँ रख जाऊंगा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज से हाउ इज द फील्ड लाइन? इट इज रेडियली इनवर्ड्स और स्फेरिकली इनवर्ड्स, राइट? सो आई विल इरेज इट। सो इफ आई हैव सपोज 2 चार्जेस, positive positive, I have to find the electric field here, so I will put the tester here, test charge, this will repel, will have the net electric field upward. We put the test charge here, repulsion, net force is here. If we put the test charge here, it will repel, it will also repel, it will cancel out. If we put the test charge here, the positive +1 coulomb, it will repel, this will also repel, net is in this direction. If we put that test charge here, both will repel, net is in this direction, right? So around 2 positive charges, the field lines will take these directions. That means positive, positive. So field lines will move like this. See, this is the, at the center it will be 0. From positive it is coming out, as we saw in the last case. It is coming out in all the directions, and they will exert the pressure and they will bend.
So this is also one property of electric field lines. So you can write the properties of electric field lines. This is asked in CBSE and can also be used in competition. That first says electric field lines do not form closed loop. They start from the positive charge and end at negative charge. They do not form the closed loop. Okay. Now second is they do not intersect. This is very important property. This has been asked in CBSE so many times. So they do not intersect because अगर आप ऐसा बना देते हैं, ठीक? अच्छा आप देखिए, if I put the positive charge here, it will move in this direction. If I put the positive charge here, it will move in this direction. But if I place a positive charge here, it has two directions to move, which is not possible, right? So the vector sum of these two lines is the net electric field at this point. We cannot, this is wrong. We cannot make the figure like this, right? So electric field is, like this. So they exert lateral pressure on each other, right? This is the second property, and they cannot intersect each other because at the point of intersection there are two directions of motion, which is not possible. Okay, I will erase it. ऐसे ही मान लीजिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मुझे यहाँ पे निकालनी है फील्ड लाइन. यहाँ मैंने टेस्ट चार्ज +1 को रखा. Repulsion, attraction, net is in this direction. If I put the test charge here, repulsion, attraction, test charge here, repulsion, attraction. If I put the test charge here, see the influence of this charge over this location will be less. Its influence will be more. So it will attract. If I put the test charge here, this will repel. Its influence is more. So this is the overall direction of electric field lines. So what is the final goal? You can see positive to negative. This direction. Positives and so always electric field lines come from positive and end at negative. So this direction. If you go, this is this positive to negative. Then you can see it is coming inward from all the directions. Okay, and it is going outwards in all the directions. So this is the diagram of electric field lines around positive and negative charge. So whatever the complex diagram is, you just have to use your tester +1 Coulomb charge. You place the tester there and you know what is the electric field, what is the direction, right? So this is how you find it. So the magnitude of electric field is kq by r square and the direction is found from this. Okay, so we'll do one more case. So another property of electric field lines is conservative in nature, that the net force, net work done depends only on the initial and final points, not on the path taken. Friction is non-conservative. So if you come back to the same point after moving a distance, work done is not zero. It depends on the path. But in case of electric field lines, I am not talking about induced electric field lines, which we'll study in the EMI chapter. I am talking about this electrostats. In this case, the electrostatic field is conservative in nature. Okay, you come to the same point and work done is zero. Okay, so one more case we'll do, and then two questions, and that's it for today. It's a small video, introductory video for electrostats. And if you like the video, you can comment, you can share, and then we'll move on to the next video of electrostats. Okay, so if we have three charges, if we need to find the electric field here, we'll put the test charge here. It will repel, it will repel, it will also repel. We need to find the electric field here. We put the test charge here +1. Repulsion, repulsion, repulsion. Similarly, it will happen here. Repulsion, repulsion, repulsion. At the center point, which is centroid, the electric field lines will cancel out due to the effect of all the three, symmetry. So positive charges, electric field lines come out of the positive charges and will take this shape. Finally, what is the electric field line? What will they look like? So positive. So electric field lines will come like this. They will exert lateral pressure on each other. They will bend in the direction and take this shape finally. So electric field line will be at all the points except at the centroid. It will be at all the points. So radially outwards. Okay. So this is how it should be, right? It will be here. It will be here everywhere, just except from one point. So this is the concept of electric field lines. Yeah. So first of all, electrostats is there. How do you find it? From the phenomenon.
that you are able to put on the balloon on the surface of a wall just by rubbing on the hair. So all these prominence states that there is something called electrostat, there is some static charge, and to study that we have Coulomb's law, we have electric field lines. So electric field's magnitude is kq by r square. It has some directions which can be found out from the test charge. Okay, we'll do some simple questions and then we'll wind off for today. So suppose you have two charges +2 and +8 coulomb, separated by 10 meters. We need to find the neutral point here. Neutral point is the point where electric field lines is 0, right? So let us see. If we put some charge here, repulsion, net force here is not 0. If we put some charge here, repulsion, net force can be 0, right? So you can find some neutral point here. If you put some charge here, repulsion, here both will repel, here both will repel, right? Only this is the location where the net electric field can cancel out, right? So let us assume this distance to be x. So see, actually I used to initially make some lectures in Hindi, but some students from South India contacted me and said that please make it in English. So I'm doing it in both. I hope it is understandable, right? It's not that problematic. So if this is the point, so let us find the electric field due to +2 here. It will be in this direction. How much? Q by 4 pi epsilon x square. And the electric field from here will cancel out. How much? Q by 4 pi epsilon 10 minus x square, right? 10 minus x is the distance. So from here we can have 10 minus x square is equal to 4x square. We take the under root. 10 minus x is plus minus 2x, right? We neglect the negative sign because x cannot be negative overall. So x will, if we take positive, so we have 3x is equal to 10, x is equal to 10 by 3. 10 by 3, so this is less, this is 20 by 3. This is more. Why? Because this is a stronger charge. So, at a farther away distance, both the effects can cancel out. If they would have been equal charges, then the neutral point would have been exactly at the center. But since this is stronger, we have to move closer to this so that its effect can balance the effect of 8 coulomb, right? So this is the answer. This is also an objective approach. The answer cannot be, the answer for x cannot be more than 10. It will be less than 10 only, right? I will just erase this. So let us do one more question for today. So let us take two charges +8 minus 2 coulomb separated by 10 meter, and we need to find the neutral point. Saying if we put the charge here, positive, attract and then repel, no balance point. If we put here attraction and repulsion, so this is positive we are placing, right? There is no balance point, no neutral point. If we put it here, attraction, repulsion, no balance point. So if we put here positive repel, negative attract, now it appears that a balance point is coming here, but it won't come because this is a stronger charge and the distance is also less. Its effect here will be, will always be greater than the effect of -2 here. So no neutral point can be found here. But yes, here we can find a neutral point. So -2 will attract, plus will repel. This is stronger but far. This is weak but near. So the effect can balance out. Let us suppose this distance to be x, where the neutral point is being found. So for -2 we have kq by x square equal to how much? 4 pi epsilon 10 plus x square, right? So from here we have 10 plus x square is equal to 4 into x square. So let us again take the under root. It is plus minus 2x. Taking positive, we have x equal to 10 meter, right? So from 10 meter from -2 coulomb, this side we have the neutral point where the electric field lines can balance out. Okay. These calls just keep coming. I don't know. So many spam calls nowadays in India. Something should be done.
Okay, but okay. So I hope this is clear. This is very basic electrostats, and if you have any doubts, you can write in the comments and practice such questions. Practice, and we will meet in the next class. Okay. If you have any doubts, so next topic we will study electrostats. So that's it. And as I have already told, if you are preparing for IIT JEE NEET, and you should do minimum 50 questions if you are going to school. And if you are not going to school, you should do minimum 100 questions on daily basis, PCM or PCB combined. So practice is the main key for getting results. Second is doubt solving, for which we are there, right? So you come to us and we solve your doubts. So that is the only way to crack IIT or NEET. It is not magic. It is your practice and our support doubt solving. That's it. As simple as that. So we'll meet in the next class. Share this video with all your friends. Like, comment, share, and all these YouTube tags that you put on. So put on the video. Okay, thank you.